Hello students, how are you all? I hope everybody is fine. In this video, as you can see on the board, the topic is already written. I am going to do the revision of multiplication and division. So if some of the students who have missed my videos or the students who are new admission, for them it will be something new. It will be a quick revision of the chapter. So I am not going to explain the questions from the textbook. I will be taking the help of examples in order to make the concept clear. So let's begin without wasting your time. I am doing this revision because in few days your exams will be started. तो आपके exams कभी भी शुरू हो सकते हैं. The date is not clear yet. You will be informed about the same. Okay? So that is why I am doing this revision part. So what is multiplication? Multiplication is repeated addition. What is multiplication? Multiplication is repeated addition. That means if you want to multiply 2 with 4, we all know that 2 4s are 8. So the one method multiplication is repeated addition signifies that this number 2 is added how many times? 4 times we have added, and then we have got this number, that is 8. One more example for this. 3 6 are 18. Here how many times we have added 3? We have added 3 6 times. Then we have got what? 18. That means that multiplication is repeated addition. Now what about division? Sometimes the filling the blanks come into the exam, that multiplication is dash addition, or simply multiplication is dash. So you are going to write repeated addition. Now coming to division part. What is division? Division is repeated subtraction. What is division? Division is repeated subtraction. In division we used to subtract continuously until and unless we are not getting 0. ठीक है, इक्वल अमाउंट में सब्ट्रैक्शन होता है. सो इफ इन एग्जाम देर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज डिविजन, देन डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिवाइड 8 by 2, right? We used to divide like this. 2 4s are 8. Now this means repeated subtraction means हम लोगों ने 8 में से 2 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? How many times we have subtracted 2 from 8? 1 2 3 4. 4 times we have subtracted repeatedly 2 from 8, and then we have got the answer. In some of the divisions where the remainder is not 0, वहाँ पे आपका लास्ट में कुछ नंबर बच जाएगा जो कि आपका डिविजर से कम होगा. Now before explaining more about division, I am going to clear about the multiplication. So description about the multiplication, the concept related to multiplication will be in part 1. About the division I will be explaining you tomorrow in part 2. So what are the properties of multiplication? So let's learn or study about the properties of multiplication. These properties are very important because these are going to clear out the concept. So the first property of multiplication is that multiplication, when we are going to multiply any number by 1, the answer is the number itself. So this property is called multiplicative identity. क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? We used to call this multiplicative identity. So this property states that whenever we are going to multiply any number by 1, the answer is the number itself. So if I ask you what is multiplicative identity of any particular number, your answer should be 1. These types of question can come also come in exams also. So now the second property is multiplicative property of 0. Now what happens whenever we are going to multiply any number by 0? What is the answer? The answer is 0 itself. So multiplicative property of 0 states that if we are multiplying any number by 0, the answer is the number itself. Now coming to the third property of multiplication, that is commutative property. Which property? Commutative property. So commutative property states that
A multiplied by B is equals to B multiplied by A. It means when we are multiplying any two numbers, like 13 is being multiplied by 12 and you are multiplying 12 by 13, in both the cases the answer will be same. It does not affect the result if we are interchanging the positions of the numbers. So this is commutative property of multiplication. I hope everybody has understood. Now coming to the multiplication techniques. I have already explained you about the multiplication techniques in my previous video also, but this is revision, so I am going to cover these techniques with some examples. So multiplication techniques. So the first technique which I am going to explain you is multiplying any number by 11. How do you multiply any number by 11? I am going to give you a simple trick which is also given in your maths book. For example, you want to multiply 48 by 11. So instead of following that standard method, what do we do? Because the standard method is going to take a lot of time. We are going to write 48 like this. Now this 8 is the unit digit को as it is आप उतार लेंगे. Now the second step is to add these two numbers. So 8 plus 4 is 12, right? So 2, we have written the number at one's place. Now 1 is left, so 1 will be taken as carry. Now 4 plus 1, it is 5. So when we are going to multiply 48 by 11, the answer is 528. Now coming to the next example, this was a 2-digit number. I hope you have understood क्योंकि मैं इसे पहले भी explain कर चुकी हूँ. Now I am going to take a 3-digit number. So 3-digit number which I am going to take is 282. How do we multiply 282 by 11? The same strategy will be followed. 2, 8, 2. Write the numbers with proper space. Now the digit at one's place will be the same. Now add these two numbers. 8 plus 2 is 10. 10 का आपने 0 लिया, 1 कैरी गया आपका 8 के ऊपर. Now 8 plus 1 is 9. Now this number is 9. Okay. Now 9 plus 2 is 11. 11 का 1 आपने लिया and 1 will be carry. Now 2 plus 1 is 3. So what is the answer? The answer is 3102. This is how we used to multiply any number by 11. Now I am going to take one more 3-digit number. Not a 3-digit number. Now I will be taking a 4-digit number. मैंने अभी पहले आपको 2-digit बताया, फिर 3-digit बताया. Now I will be taking one 4-digit number. 1283 multiplied by 11. How will we multiply? For that what we have to do? We have to write the numbers separately with proper space. Now the number at unit place will be the same. 8 plus 3 is 11. तो 1 आपने लिया, 1 कैरी गया आपका. 8 plus 1 is 9. 9 plus 2 is 11. 1 आपने लिया, 1 कैरी. 2 plus 1 is 3 and 3 plus 1 is 4 and 1 is 1. So answer is 1413. Now अब मैं इस आंसर को आपको चेक करके बताऊंगी whether this is correct or not by the standard method. Okay students, the standard method will also take some time. आपका जो टेक्निक है उससे ज़्यादा टाइम स्टैंडर्ड मेथड में लगता है, राइट? सी 14113. सो आवर आंसर इज राइट. जो हमने किया था वो आंसर हमारा सही है. So that technique is working. So you can use this technique in multiplication of any number by 11. So I have given you example of 2-digit, 3-digit and 4-digit. Now comes your homework. This is your homework and you have to give the heading as revision and then you have to write homework. So I am giving the questions which are not in the book. So you have to watch the video and note down the questions. So first question is 68 multiplied by 11. Second question is 623 multiplied by 11. Third question is 2962 multiplied by 11. These three questions you have to do in your maths homework copy.
द आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय योर क्लास टीचर्स. आई होप यू डोंट नीड द आंसर्स. आपको आंसर्स की ज़रूरत नहीं है. आप अपना आंसर करने के बाद चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से. यू कैन चेक योर आंसर्स बाय कैलकुलेटर्स. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द मल्टीप्लिकेशन टेक्निक ऑफ 15. How do we multiply any number by 15? So I hope everybody has studied this. So you can recall that method जो मैंने आप लोगों को बताया था. So students, that method was very easy. The first thing which we used to do is we have to split the term 15. तो अगर आपको 23 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? 15 को हम लोग स्प्लिट करेंगे and it will be split like this: 10 plus 5. So as I have already told you the things in the bracket. यहाँ पे प्लस का साइन, अगर माइनस होता तो हम लोग माइनस भी करते. तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑल्सो एंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑल्सो. सो हाउ विल बी प्रोसीड? 23 मल्टीप्लाइड बाय 10. अब यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो मैं माइनस करती. 15 इज 10 प्लस 5. अगर यहाँ लिखा होता 20 माइनस 5 तो मैं यहाँ पे क्या लिखती? माइनस करती. दिस इस तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हैं बट ज़्यादा इजी ये है आपका. ठीक है. 15 कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो बट दिस इज मोर कन्वीनियंट. नाउ दिस इज देयर इज अ पॉजिटिव साइन तो मैंने पॉजिटिव लगाया. नाउ 23 मल्टीप्लाइड बाय 5. 23 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 230. नाउ 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 10 plus 1 is 11, right? Now what is the answer? The answer is 345, right students? Now this was a 2-digit number by which we have multiplied 15. Now I am going to take a 3-digit number. So the 3-digit number is 256 multiplied by 15. How will we proceed? Within bracket 10 plus 5. Now this 256 will be multiplied by 10 also. This 256 will be multiplied by 5 also. So it will be 2560 plus 6 5 6 are 30, 3 carry, 5 5 are 25, 28, 5 2 are 10, 11, 12. Now we have to proceed for the addition. 0 plus 0, 8 plus 6 is 14. Then here it will be 8. Now 3. So what is the answer? 3840. So I hope all of you have understood how to multiply a 2-digit number or a 3-digit number by 15 by using multiplication technique. Now using the same multiplication technique, I am going to give you your revision homework. Supposed to be done in which copy? Maths homework copy. ठीक है. This is your revision homework. Now the questions are 48 multiplied by 15. First question. The second question will be 396 multiplied by 15. You have to do in your maths homework copy. After completing the answers by using the property or the technique, you have to match the answers by solving them via calculator. Calculator से करके आप check कर लीजिएगा. Now I am going to explain you the third technique. That third technique is multiplication of any number by 99. By which number? 99. Firstly, I will give you time to recall because you have studied this in this chapter when I was explaining you, right? So 99 से कैसे करते थे explain? How do we split 99? आप 99 को लिखते थे 100 minus 1. So the first question is 36 multiplied by 99. So we have to write 99 like this: 100 minus 1. So the same thing is going to happen. It is going to be multiplied by both the numbers. So 3600 minus 36. When you are going to do the subtraction, यहाँ पे आपका क्या आएगा? 6 5. So the answer is 3564. ये आपका फर्स्ट मेथड है. देर आर 2 methods टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 99. नाउ द सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बाय अ डिफरेंट मेथड. और मुझे आई पर्सनली लाइक दैट सेकेंड मेथड. मुझे सेकेंड मेथड ज़्यादा पसंद आता है.
आप लोगों को कौन सा पसंद है बताइएगा कमेंट सेक्शन में. सो द सेकेंड मेथड इज 36 multiplied by 99. So in the second method the first step is, जो इस नंबर से आपको 99 को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर. 36 minus 1, now it is 35. Now the second step is that 99 में से जो आपका रिजल्ट आया है आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. So what will be the answer? 64. Now join these two. So the answer is 3564. Very easy, more convenient and taken a less amount of time as compared to the first method. पहले मेथड में आपको मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, तो it is taking a lot of time as compared to this one. Now I am going to explain you one more example. So the next example will be 25 multiplied by 99. तो पहला स्टेप 25 माइनस 1 24. नेक्स्ट स्टेप 99 माइनस 24. 9 माइनस 4 इज 5. 9 माइनस 2 इज 7. सो आंसर इज 2475. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. सो टिल हियर दैट मल्टीप्लिकेशन पार्ट एंड द मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स आर ओवर. नाउ आई वॉन्ट टू टीच यू अबाउट the word problems based on multiplication, but before teaching those word problems I want to give the revision homework of this multiplication technique. So the revision homework will be 28 multiplied by 99, first option. Second option is 56 multiplied by 99. You are supposed to do this homework in the maths homework copy. करने के बाद कैलकुलेटर से सॉल्व करके अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट फ्रॉम दी मैथ्स बुक. नाउ आई हैव गॉट सम क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो वन स्टूडेंट हैज़ कमेंटेड दैट ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सॉल्व द फॉलोइंग. उसको क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझ में आया. तो क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM. Okay, so on this concept question number 9 is based. My marker has fallen. Let me pick it up. Yes. So students, the two numbers given in the question are 21 and 28. If their LCM is 84. अब हमें HCF नहीं पता. LCM क्या दिया है आपका? 84, right? Now this 84 is in multiplication with HCF. When it will go on the left hand side, what will happen? This will be in divide. कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. नाउ लेट मी फिल द इंक इन माई मार्कर बिकॉज सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब जिस बच्चे को भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट कि जो मैंने इसमें सिंप्लीफिकेशन किया है उसको इसमें प्रॉब्लम आई होगी सिंप्लीफिकेशन में. तो आपको क्या करना होता है? 21 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 84. तो अब यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आप लोग, दो नंबर्स दिए हैं. जब आप 84 आप ऊपर और नीचे सेम टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं. अगर आपने इसको 3 के टेबल से किया है तो इसको भी 3 के टेबल से करना है आपको. अगर आपने इस नंबर और इस नंबर को दोनों को किया तो दोनों एक ही टेबल से करेंगे. तो हम लोग 3 के टेबल से करते हैं. 3 7 जा 21. अब जब 84 को 3 से डिवाइड करते हैं, आप ऐसे डिवाइड करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ सो दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट. 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. कैन यू सी? नाउ 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. तो 3 7 जा 328. ऊपर नीचे सेम टेबल गया आपका. 3 7 जा 328 जा. अब 28 यहाँ पे भी है, 28 यहाँ पे भी है, तो दोनों सेम सेम जो होते हैं ऊपर वो कट जाते हैं और उनकी जगह पे क्या आ जाता है? 1 आ जाता है. नाउ व्हाट इज HCF? द HCF इज 7. वन मोर डाउट वॉज देयर इन द कमेंट सेक्शन. वन स्टूडेंट हैज़ नॉट अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट मिसेस ईरानी हैज़ 2 क्लासेस. ठीक है. मिसेस ईरानी के पास टोटल कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लासेस. नाउ ईच क्लास हैज़ 24 and 18 स्टूडेंट.
See, in one class, what is the strength? 24. And in the other class, what is the strength of the class? That is 18. Now what happened? Mrs. Irani wants to divide each class into groups. हर क्लास को किस में बांटना चाह रही हैं? वो ग्रुप्स में बांटना चाह रही हैं, so that every group in every class has the same number of students. यानी कि जिस क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स में क्लास डिवाइड होगी और इस क्लास में भी कुछ ग्रुप्स में क्लास डिवाइड होगी, राइट? सो शी वॉन्ट्स टू डिवाइड इन द ग्रुप्स. जैसे हम लोग कोई एक्टिविटी कराते हैं तो क्लास को ग्रुप में डिवाइड करते हैं. सो व्हाट हैपेंड, शी वॉन्ट्स द नंबर इन एवरी ग्रुप टू बी सेम एंड शी वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी नो स्टूडेंट्स लेफ्ट ओवर. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? अब मैक्सिमम लिखा है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू फाइंड आउट द HCF. HCF क्या होगा आपका 24 और 18 का? 18 1 जा 18. Now 6 3 जा 18. So what is the HCF? The HCF is 6. आप जैसा कि देख सकते हैं 24 स्टूडेंट जिस क्लास में है इसमें कितने ग्रुप्स बनेंगे? 6 6 6 6 because 6 4 जा 24. So there will be 4 groups in this class. Now come to this class. 6 6 6. There will be 3 groups in this class because 6 3s are 18. See, now the total number of students in every group is same and that is maximum also, and no student is left over. So this is how Mrs. Irani wanted to distribute the class. I hope that student has understood this question now. So please revise the chapter, watch the video carefully, do the homework in the homework copy. Thank you students. Have a great day. Subscribe the channel and press the bell icon.